सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। सुबह का टाइम 6 बजे हैं और हम लोग तैयार हो चुके हैं उमरकोट के लिए। तो 4 घंटे का सफ़र है कराची से उमरकोट तक का। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग 10 या 11 बजे के दरमियान में पहुंच जाएंगे, अगर रास्ते में ट्रैफिक ना हुई तो। बेबी सुल्तान भी सुबह उठ गया था, बेचारा डिस्टर्ब हुआ था। तो हमारा जो है वो उमरकोट जाने का मकसद ये था कि वहाँ पे आपको पता है सिंध में पानी का बहुत मसला है। एक तो पानी की किल्लत भी है, रेगिस्तान इलाका है, और दूसरा जो है ना वहाँ का पानी जो है वो खारा पानी है, गंदा पानी है वो, मतलब उस तरह फ़िल्टर वाला नहीं मिलता उनको। तो लोग जो है वो बीमार हो रहे थे, बच्चे बीमार हो रहे थे, बच्चों के पेट ख़राब हो रहे थे, डायरिया हो रहा था उनको, तो बड़ों में भी काफ़ी बीमारियां फैल रही थी। तो जब कुछ सालों पहले टॉड को इस बात का पता चला तो उन्होंने जो है वो पानी के फ़िल्टर प्लांट के लिए, RO प्लांट के लिए फ़ंड्स क्रिएट किए। तो उन्होंने फिर पूरे सिंध में मुख्तलिफ़ इलाकों में RO प्लांट लगाए हैं। तो आज हम लोग जो हैं वो टॉड विजिट करना चाहते हैं उमरकोट में, जहाँ जहाँ उन्होंने RO प्लांट लगा। नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर द उमरकोट। तो वेयर इज द खाना? हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता भी हम लोग रास्ते में ही करेंगे। तो देखते हैं फिर। गाइस टॉड देखिए अभी दोबारा अंदर गए हैं, तो मैं इनको बुलाने आई हूँ। हमेशा ये मुझे कहते रहते हैं, अंडर प्रेशर करते रहते हैं, प्लीज जल्दी हरी अप, वी हैव नो टाइम। सो नाउ यू नो he is very relaxed, very relaxed. You did such a good job. I woke up and she packed everything. I was like, my goodness, what a wonderful wife I have. because I knew that. She packed not only her things, she packed my things, she packed the baby's things, and everything was ready for me. Yeah. All I had to do was get up and go. Because guys, मुझे पता था कि सुबह 6 बजे हम लोगों ने जाना है, इसलिए मुझे पूरी रात सही तरह नींद ही नहीं आई। मैंने पहले ही सारी पैकिंग अपनी करके रख ली थी। So मैं सिर्फ और सिर्फ I slept only 1 hour. You can sleep in the van. We got a comfortable van to sleep in. Yeah. गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सुबह 6 बजे कराची से निकले थे। तो रास्ते में अभी हम लोग नूरियाबाद पे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, स्टे किया है हमने नाश्ते के लिए। तो हमें बहुत भूख लगी हुई थी, हमने सोचा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें टाइम नहीं मिलेगा। So look at your copy. Oh no, that's my copy. Yeah, this is. मैं टॉड को अक्सर कहती हूँ कि पॉलर बियर। तो हमें मिल गया यहाँ पे देखने पॉलर बियर। एक मेरे पास पॉलर बियर है, एक ये पॉलर बियर है और एक ये छोटा पॉलर बियर है। नाइस। मिल गया दूध? नहीं मिला। We got to sit over there. That's right. These are all men over there. These are not men there. These are वाओ माशाल्लाह, बहुत ही मीठा पानी है। इट्स वेरी स्वीट वाटर। इस गांव का नाम है खलीफा सबोज। तो यहाँ पे टॉड ने ये फिल्टर प्लांट लगाया है इन लोगों के लिए। ये लोग बहुत ही पानी का यहाँ पे बहुत ही मसला था, बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी। ये लोग दूर दूर इलाकों में
अब पीने का पानी लेकर आते थे, लेकिन वो भी साफ़ नहीं होता था, खारा पानी होता था। तो फिर टॉड ने इस गांव में भी लगवा के दिया है, अभी आपको आप देख सकते हैं। So, We have over 540 water projects of all sizes and shapes and kinds throughout Pakistan. This is one of them. Oh my God! Oh, that's. Just kidding. Oh, ha! Ah! Oh, yeah, yeah. This is delicious. Thank you, Fozia Shah, one of our most wonderful donors and partners. Fozia, because of you, we have given thousands of people drinking water in so many projects. And as you can see, all the animals also get water because the water comes over here, and the water that's in this little pool, this gets to the animals, and we have a lot of animals here. They also get thirsty. So it's just a wonderful thing. MashaAllah. Thank you, Fozia. तो अच्छा, तो गाइज हम लोग हमारे पीछे ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है। तो ठीक इसी जगह 350 फीट की गहराई पे बोरिंग हुई भी है। तो उस बोरिंग को जो है वो बेसिकली ये सोलर पैनल चलाता है, जो कि सूरज की रोशनी से ये चलता है और बोरिंग को पावर करता है। तो यहाँ से जो है वो पानी वो उस फिल्ट्रेशन प्लांट में जाता है, और वहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, जहाँ वो वाटर क्लीन होता है, साफ होता है, तो लोगों को मीठा पानी पीने को मिलता है। So it's really great to visit these villages, to see the work that CDRS is doing in the field, our great team. Without them, we can't do anything. Without our donors, we can't do anything. So it's a big teamwork. We also work with the community here who helps in bringing their people the gift of water and the gift of light in areas with no electricity. And this solar system has provided enough power to pump the water from 350 feet and to clean it with the filtration system. And we have 550 water projects of different kinds all over Pakistan, from the mountains to the sea. And we are very proud of the work that we've done, and very happy that we have been able to provide so many people in Pakistan, nearly 1 million people every day, getting water from CDRS. And we hope to do more, so please support us. Thank you.